Hello everyone, I am Dr. Shikhar Bansal and this video is regarding a major update in the management of diabetes mellitus with respect to the insulin therapy. A once weekly basal insulin has been launched in India. This is called as icodec. So how does it act for such a long period of time that it requires only once weekly dosing? It is because in this complex molecule it is bound to a protein which is called albumin. So due to this it stays in the circulation for a longer period of time and is gradually and slowly released from this complex molecule to meet the basal daily insulin requirement. Studies were ongoing since many years on this compound, and recently it has been approved by the FDA in the wake of a study in which 2,700 patients were studied, and this basal once weekly insulin was compared with the basal daily insulin that we are using nowadays, and this study found that this once weekly regimen had a similar efficacy as well as the side effect profile when comparing it to daily basal insulin. तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सिमिलर एफिकेसी है, अगर सिमिलर साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, तो फिर इस नए ड्रग का ज़रूरत क्या था? तो एक सर्वे हुआ था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 59% ऑफ द फिजिशियंस ने ये बोला था कि उनका पेशेंट अगर ठीक से इंसुलिन नहीं ले रहा है, कंप्लाइंट विद थेरेपी नहीं है, तो उसका एक मेन रीज़न था इंजेक्शन बर्डन, कि उसको डेली इतने सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते थे. नॉर्मली जब भी हम इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है जो दिन में एक बार इंजेक्शन लिया जाता है, और 3 डोजेस होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के, जो तीनों टाइम जो आप मील्स लेते हैं उससे 30 से 40 मिनट पहले लिया जाता है, जो कि जो खाने के बाद ग्लूकोज स्पाइक होगा बॉडी में उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अब जो डेली हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हम लेते हैं तो साल के 365 दिन में इट बिकम्स 365 इंजेक्शंस, और वहीं अगर हम हफ्ते में एक बार ये लेंगे तो वो 52 इंजेक्शंस ही होंगे. तो ये सिग्निफिकेंटली इंजेक्शन बर्डन कम कर रहा है. ये जो वंस वीकली इंसुलिन है इसका यूनिट टू यूनिट सिमिलर एफिकेसी है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन दैट वी वर यूजिंग, जो कि डेली डोजिंग में होता था. तो अब एफिकेसी यूनिट टू यूनिट कंपेरेबल है, तो कॉस्ट का क्या डिफरेंस है यूनिट टू यूनिट? तो अभी तक मैंने जितना ऑनलाइन चेक किया है ये अप्रूव हो गया है इंडिया में, बट अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं था. बट जो एस्टिमेट दिया जा रहा है वो ये है कि इस इंजेक्शन के 70 यूनिट्स अराउंड 261 रुपीज़ कॉस्ट करेंगे. तो इसको अगर कंपेयर करें हम जो अभी जो बेसल इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं वो कितना किस प्राइस में पड़ता था, तो रेंजेस कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन जितना ऑनलाइन प्राइसेस मिलते हैं उसमें अराउंड 100 यूनिट्स 400 रुपये से लेके 630-700 रुपीज़ ऐसे था. तो इस हिसाब से एक यूनिट 4 रुपये का और 70 यूनिट्स 280 रुपीज़ के पड़ेंगे, तो जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट तो कंपेरेबल हैं दोनों इंसुलिन रेजिमेंट्स. बाकी तो जब ये रोल आउट होगा तभी पता चलेगा कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस. इसके अलावा नाउ द पॉइंट इज हाउ डू वी टाइट्रेट दिस. सो whenever you are shifting a patient from the daily basal regimen of the insulin to the once weekly regimen of insulin, so you have to multiply the daily dose by 7, so that cumulative dose would be given. Now in the first week you have to also add 50% of the total cumulative dose in the once weekly insulin requirement. So suppose you are giving 10 units of basal insulin per day to a patient, so then over the 7 days it makes 70 units, and now 50% of this is 35, so 70 plus 35, 105 units will be the dose of the once weekly insulin that you will give in the first week, and then from the week 2 onwards you will give 70 units of insulin, that is 7 times the daily basal insulin dose. Coming to the dose titration, so the dose titration is generally done in changes of 10 to 20 units per week based on the sugar levels that were recorded in the 2 to 3 days prior to the next dose of the once weekly insulin. So this is how you titrate and dose the once weekly regimen of the insulin.